हेलो फ्रेंड्स, तो अर्पनाज एक्सोटिक किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम गम पेस्ट लेंगे, उसके छोटे छोटे बॉल बना के इस तरीके से तार में डाल देंगे तो ये हमारा पर्स का हैंडल बन गया। गम पेस्ट नहीं है तो आप फॉन्डेंट से भी बीड्स बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइलोस पाउडर डाल दे तो वो शेप आउट नहीं होगा। मैंने ये स्पॉन्ज 180 ग्राम प्रीमिक्स से बनाया है और 6 इंच टिन में बेक किया है। केक को हम क्रम कोट करेंगे और फिर इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट करने रख देंगे। ये स्टेप करना जरूरी है। केक को फ्रिज में सेट करने से जब आप इसको 2 पार्ट में कट करेंगे तो ये अच्छे से कट भी हो जाएगी और हैंडल भी कर सकेंगे।
तो रेडी हो चुका है हमारा पर्स केक।